Hello class 10. So let's continue our exercise 3.3, question number 2, problem number 9. This problem says x plus 3 upon x plus 2 is equals to this. Okay. You have to cross multiply it. Cross multiply this part into this part, cross multiply this part into this part. What will be the result? X plus 3 will be multiplied by this term and 3x minus 7 will be multiplied by x plus 2. Okay. What will be the next step? X into 2x is 2x square. 3 into 6, 3 to the 6x, x into minus 3x, and x into minus 3 is minus 3x, and minus of 9, plus 3 and minus 3 is minus 1. Minus 3x into x will be plus of 3x into plus of x will be 3x square, plus of 3x into 2 will be 3 to the 6x, and minus of 7 into x will be minus of 7x, minus of 7 into 2 will be minus of 14. Take all terms one side, सारी terms एक side ले जाइए. 2x square minus 3x square, this will become plus of 3x, 6x minus 3x is plus of 3x, and this will become this 6x minus 7x, what will become minus of 1x or only minus x. ये पूरा ये दोनों टर्म से आंसर क्या आएगा? 6 में से 7 गया तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 1. इसीलिए यहाँ पे पीछे x है तो माइनस ऑफ x आएगा. इस माइनस x को इस तरफ लाइए तो प्लस ऑफ x हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से ये आया और इन दोनों से ये आया, माइनस का आया लेकिन इस तरफ आया, शिफ्ट किया इस तरफ, ट्रांसपोज किया तो प्लस का हो गया. ठीक है, ध्यान रखना. Do not confuse yourself with the sign. साइन से कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. What are the last step? ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक लास्ट ये बचा. प्लस ऑफ 14 माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0. 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज माइनस ऑफ x स्क्वायर. 3 plus 4, 3 plus 1 is 4x and प्लस ऑफ 14 माइनस 9 इज 1. यहां से क्या करेंगे? माइनस को हटा दो, पूरे को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो. ये तो आ जाएगा 0 ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा. ठीक है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस. व्हाट इज द सम? Sum is minus of 4 middle term, and product is minus 5 into 1. यहाँ पे 1 है तो only minus of 5. कब आएगा ये केस? ये तभी पॉसिबल है जब minus of 5 into 1 हो और minus of 5 plus 1. माइनस 5 में प्लस 1 कर दूं क्या आएगा? माइनस का 4, और माइनस 5 में प्लस 1 का इंटू करूं तो माइनस का 5. सो दिस इज सिंपल. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0. टेक आउट x कॉमन, x प्लस 1, टेक आउट माइनस 5 कॉमन, x प्लस 1. अगेन सेम आएगा क्योंकि दोनों टर्म में माइनस माइनस है. आइदर x प्लस 1 and x minus 1, x minus 5.
इक्वल्स टू 0। ये टर्म कॉमन है इसलिए एक ले ली और x माइनस 5 दूसरी टर्म बची। लास्ट में क्या बोलेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, ट्रांसपोज दिस साइड plus 1, that side will become minus of 1, minus 5, that side will become plus of 5. So answer are minus 5 and plus 5. Let's take another question. Hello class 10. Let's take the question number 210. Okay, this is the question and you have to factorize this polynomial. And find the value of x. You have to solve and find the value of x. Now in this question, if you see this and this part, you can create a term of a square and b square here. See, this can be written as a square x plus 2a square x. You can write it this way: 2a square x is equals to 4. 2a square plus 2a square x is equals to 4. Minus sign is outside. Then again, one more thing. This a4 minus b4 can be written as a square and b square. If you see this form and remember the form of a plus b, a minus b equals to a square plus b square. If you remember this identity, this is the identity. If you remember this, I am rubbing it. If you remember this identity, we can write this part as a square minus of b square into a square plus of b square. Okay, assuming a square as a and b square as b only. So इस पूरे टर्म को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, in this you have a square and you have a square but you do not have b square, तो आपको b स्क्वायर की टर्म भी क्रिएट करनी होगी। टेक कॉमन 2 आउटसाइड, 2x बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई एम एडिंग b स्क्वायर एंड आई एम सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर। b स्क्वायर को ऐड किया और b स्क्वायर को माइनस किया, ये दोनों का वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 0 होता है। इसलिए मैंने सिर्फ ये क्रिएट करना है, इसलिए क्या किया, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, आई एम एडिंग बी स्क्वायर एंड आई एम सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर हियर। नाउ गो फर्दर, a square plus make one term a square plus b square. One term is this one, these two terms, okay, and then it is plus a square minus b square. Okay, you can write like this, two groups. I have created two groups. मैंने दो ग्रुप्स बना लिए हैं और ये पीछे वाला पूरा पार्ट एज इट इज लिख दीजिए। Now if I remove this bracket, this bigger bracket, the value will be
2x into a square plus b square minus of 2x, this minus 2x multiplied with this and this both. Now you should take common 2x from here and 2x from here. This is actually what? What is this 4x square? It is 2x whole square. So I am taking 2x common. So inside there will be only 2x and here minus sign and this term a square plus b square in the bracket. So this is the term. One term we have created. Now other term. Again take common. What you will take common? What is common here? This a square minus b square and a square minus b square, and that too take minus of a square minus b square. What will be remaining? Plus of minus is taken outside, minus को बाहर ले लिया तो बचेगा क्या? Plus of 2x, then minus of a square minus b square. इसका माइनस का पार्ट बाहर लिया तो अंदर का साइन क्या आ जाएगा? What will be the sign inside? Negative sign, opposite. If you see, this is same. So we get 2x a square plus b square as one term, and the other term will be 2x minus a square minus equals to 0. Now after this, write either 2x minus a square plus b square equals to 0 or 2x minus a square minus b square equals to 0. Do not forget to write this bracket. ये ब्रैकेट अगर हटा दिया तो साइन चेंज करना, और साइन चेंज अगर नहीं करते हो तो फिर ब्रैकेट रखे रखना. Transpose these two parts. What you will get? 2x equals to a square plus b square. Here we will get, or 2x equals to a square minus b square. Okay, you get this whole term. Here this minus term will become plus, minus of this will become positive. Now divide these two, divide these two. So what is the answer? This is the answer. So value of x is a square plus b square upon 2 and a square minus b square upon 2 are the two values of this equation. This is the factorization method. This is factorization method. This can also be done. This is factorization using splitting middle term. What you are doing? Middle term. You split middle term is this. आपने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये क्रिएट किया है ना? दिस इज फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. ओके, now let's take the last problem of your exercise 3.3. abx square b square minus acx minus of bc. So what is the sum here? Sum is this middle term b square minus ac. What is the product? Product is actually this minus of bc into this ab, or we can write b into b is b square and a into c is ac, and this minus sign can be written is there. ध्यान से देखो, look carefully.
B square is here, B square is here. Minus of AC is here, minus of AC is here. So the sum can be written as this B square plus minus of AC, B square into minus of AC. ठीक है? So now we will do accordingly. What will be the factors? Take out the factors. Write first like this: x into b square plus of b square x and minus of acx minus of bc equals to 0. Sorry. Now take out bx from here, and inside there will be a and ax. Okay. Now from here it will be only b. one b is here, so other b is here. एक b निकाल लिया, दूसरा b बच गया, remaining part. Now take out what is common, c and minus 1. Take out minus of c, you will get again ax plus b. सेम टर्म में, इसका मतलब क्या, आपकी अप्रोच जो है क्वेश्चन सॉल्व सही हो रहा है. राइट दिस and write this. So you can write ax plus b equals to 0 or bx minus c equals to 0. Value of x will be, take this plus of b, transpose it in the right side, you will get minus of b. Divide this a here, so this is one answer. Transpose this minus c, इस minus c को transpose किया इस तरफ, it will be plus of c, here will be x, and divide this b, so this will be other answer. So your answers are Is there any mistake? Check it. I think it's correct. Okay. So with this we have completed our exercise. Okay students.